गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो है सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वो होस्ट की है वर्चुअल मोड में। जो फर्स्ट ये समिट थी ये जनवरी 2023 में होस्ट की गई थी। तो ग्लोबल साउथ आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कोई जोग्राफिकल लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सदर्न हेमिस्फेयर में कंट्रीज़ रहती हैं उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। बेसिकली ये एक ज्योग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और डेवलपमेंटल कंसेप्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदर्न हेमिस्फेयर में रहने वाली कंट्रीज़ या कोई एक पर्टिकुलर लाइन के नीचे रहने वाली कंट्रीज़ जो हैं उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। जैसे इंडिया, चाइना, नदर्न हाफ ऑफ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ भी जो हैं ग्लोबल साउथ के अंदर आती हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्री जो सदर्न हेमिस्फेयर में है वो ग्लोबल साउथ में नहीं आती हैं। ठीक है। तो इंडिया जो है वो धीरे धीरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के थ्रू ग्लोबल साउथ का लीडर एमर्ज होता जा रहा है। कैसे? हमने कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पर उन्हें हेल्प किया था 100 कंट्रीज़ को लगभग। ये जो ग्लोबल साउथ समिट की जो वॉइस का जो समिट है ये भी इंडिया ने ही लीड की जनवरी 2023 में। और उसी के ही टाइम पर यह भी डिसाइड किया गया था कि अफ्रीकन यूनियन को भी जो है G20 का मेंबर बनवाया जाएगा इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पर। 15th ब्रिक्स समिट में भी जो है पीएम मोदी ने बात करी ग्लोबल साउथ के बारे में। ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ग्लोबल ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टर्म हो, बल्कि एक शेयर्ड हिस्ट्री है अगेंस्ट कॉलोनलिज्म और अपार्थीड। सितंबर 2023 में इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव भी होस्ट किया गया इंडिया द्वारा, जिसमें इंडिया ने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अपनी पार्टनर कंट्रीज़ के साथ शेयर करी। इंडिया ने दक्षिण नाम का जो है एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जो कि एक ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, जो कि सिर्फ ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए ही इनॉग्रेट किया गया है। ग्लोबल साउथ के लिए पीएम मोदी ने कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग की स्ट्रेटजी भी जो है वो सामने रखी है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रपोज्ड इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है रिसेंटली उन्होंने भी इंडिया और यूके के एफटीए के बारे में ब्रिटिश पीएम और फॉरेन सेक्रेटरी से बात की है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो मर्केंडाइज ट्रेड जो है, खासकर जो इंडियन प्रोडक्ट्स का, जिसमें पेट्रोलियम, मेडिसिन, डायमंड, मशीन पार्ट्स, एरोप्लेन्स, वुडन फर्नीचर आता है, जो कि लगभग $6 बिलियन का ट्रेड है, उस पर अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगता यूके में। तो अगर एफटीए साइन हो भी जाता तो हमें उसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होने वाला है। सर्विसेज के केस में अगर हम देखें तो इंडिया जो है प्रायोरिटी वीज़ा की डिमांड कर रहा है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स के लिए यूके में जाते हैं। पर जो है इस पर जो है अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। रूल्स ऑफ ओरिजिन का भी क्लॉज लगवाने के लिए इंडिया जो है वो पुश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि कोई थर्ड कंट्री जो है इस एफटीए का बेनिफिट ना ले ले। कि समझ लो कि यूके और चाइना के बीच में अगर एफटीए हो तो उसका यूज़ करते हुए कहीं चाइना जो है वो यूके के थ्रू गुड्स को पुश ना करे। ओके। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी जो है यूके के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक्सेस मिलेगा अगर एफटीए होगा तो। लेकिन इंडियन फर्म्स जो हैं उनको कम्पीट करना पड़ता है, मुश्किल होता है यूके की गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। तो उसके लिए इंडिया को कंजर्वेटिव और केयरफुल रहना पड़ेगा। और सिर्फ एफटीए मतलब टैरिफ ही नहीं होता है, बल्कि इंडिया को बाकी के इश्यूज जो आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जैसे लेबर स्टैंडर्ड्स, जेंडर, एनवायरनमेंट, डिजिटल ट्रेड, आईपीआर, इसके ऊपर भी जो है कोई मेजर ऑब्लिगेशन नहीं साइन करनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है इंडिया यूके एफटीए की, कि ये एक टेम्पलेट बनेगा, क्योंकि ये जब साइन हो जाएगा उसके बाद ही इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए साइन करेगा। ठीक है। गवर्नमेंट एक तरह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने का कोशिश कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और अफ्रीकन नेशंस के साथ। अब चाइना का फैक्टर इसमें बहुत मेजर है। जब सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है कोविड के टाइम पर, तब से बाकी कंट्रीज़ जितनी भी हैं उन्होंने चाइना प्लस वन पॉलिसी जो है वो परसू करना शुरू कर दिया है। मतलब कि वो चाइना के अलावा एक और ऐसी कंट्री जो है, खासकर इंडिया, उसके साथ रिलेशंस बनाना चाहते हैं, अपनी सप्लाई चेन को जो है वो डाइवर्स करना चाहते हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा अगर एमर्ज हो तो वो एक ही कंट्री जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं। वहाँ की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है उनका इलेक्शन आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया और यूके का एफटीए साइन हो, ताकि वो इकोनॉमी को एक बूस्ट दिखाकर जो है इलेक्शन लड़ सकें। ठीक है। तो इंडिया और यूके दोनों के लिए ही जो है ये
बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इंडियन टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो लगभग 10% वहाँ पर उस पर टैरिफ लगता है। तो बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं यूके में, उनके साथ compete करने में इंडिया को मुश्किल होती है। तो अगर एफटीए साइन हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये जो ये कंपटीशन है इंडिया उसमें आगे हो जाएगा। ऐसे ही यूके भी जो है उसको लगभग 14.6% रेट देना जो है टैरिफ्स देने पड़ते हैं इंडिया में, और जो कि अगर एफटीए साइन हो जाएगा तो उसमें उनको जो है वो compete करने में आसानी होगी। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत से इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं यूके को वो ऑलरेडी लो या फिर ज़ीरो टैरिफ्स पर हैं, तो हम एफटीए क्यों साइन करें अलग से। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जो है वो ये कह रही है कि अगर हम ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस दे देंगे इंडियन टेक्सटाइल्स को, तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, वो स्ट्रेस में आ जाएंगी, क्योंकि वो तो compete नहीं कर पाएंगे फिर इंडियन प्रोडक्ट से। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहना है। फिर कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं, जैसे कि रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। एक कार्बन टैक्स का भी इशू आ रहा है सामने, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, वैसे ही यूके भी जो है वो सोच रहा है कि मेटल इंपोर्ट्स पर जो है कार्बन एमिशंस के बेस्ड जो है वो टैक्स लगाया जाए। तो उसके बारे में भी इंडिया को एफटीए में ही बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिवनेस इंडेक्स जो है उसमें देखा गया कि इंडिया पिछले 10 सालों में 83 से जो है वो घटकर रैंक 103 हो गया इंडिया का। तो ये जो जीटीसीआई है ये बेसिकली मेजर करता है कि कंट्रीज़ कैसे ग्रो या अट्रैक्ट कर रही हैं टैलेंट को या फिर रिटेन कर रही हैं टैलेंट को। एक एनुअल बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जो कि बिजनेस स्कूल इंसियाड द्वारा जो है वो निकाला जाता है या पब्लिश किया जाता है। तो एक यूनिक रिसोर्स बन जाता है डिसीजन मेकर्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि ग्लोबल टैलेंट कंपैटिटिवनेस की क्या पिक्चर है, और उसके बेसिस पर भी अपनी इकोनॉमी को जो है वो आगे उसके बेसिस पर स्ट्रेटजीज बना पाते हैं। अगर हम इस साल की जीटीसीआई की जो है वो हाइलाइट्स देखें, तो जो ये 10th एडिशन है इसमें 134 कंट्रीज़ को जो है वो कवर किया गया है। सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और यूएस ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इंडेक्स में, और इंडिया का 103 रैंक दिया गया है जो कि वर्स्ट है ब्रिक्स कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू पंबन ब्रिज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है अगले कुछ महीनों में न्यू पंबन ब्रिज को भी जो है इनॉग्रेट करने वाले हैं। इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है ये। रामेश्वरम जो है पंबन आइलैंड में उसको कनेक्ट करेगा ये मंडपम से, तमिलनाडु के मेनलैंड से। इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 0.78 किलोमीटर होगी। आइकॉनिक पंबन ब्रिज जो इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज है उसको रिप्लेस करेगा। और क्योंकि ये एक तरह से वर्टिकल लिफ्ट फैसिलिटी होगी, इसमें क्या होगा कि जैसे जब बोट पास करनी है तो ये ब्रिज जो है स्मूथली ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, पैरेलली। और ये सेंसर्स का इस्तेमाल करते करते हुए इस ब्रिज को उठाया जाएगा। और ये डबल रेलवे लाइन और फ्यूचर इलेक्ट्रिफिकेशन को मद्देनज़र रख के ही जो है ये इसको बिल्ड किया गया है, ताकि फ्यूचर में इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉस्मिक वाइन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टीम ऑफ रिसर्चर्स ने एक एक्सटेंसिव गैलेक्सी स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई किया है कॉस्मिक वाइन नाम का। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के ही बेसिस पर ही इसको जो है वो स्टडी करके जो है वो डिस्कवर किया गया है। तो ये कॉस्मिक वाइन जो है लगभग 20 गैलेक्सीज जो 13 लाइट ईयर्स में जो है के डिस्टेंस पर जो है स्ट्रेच है, उसको जो है डिस्कवर किया गया है। बहुत ही पुरानी है ये, मतलब अगर हम कहें कि 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है हमारे यूनिवर्स की एज, तो ये गैलेक्सीज लगभग 12 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग 2 ऑफ द मोस्ट मैसिव गैलेक्सीज जो हैं पाई जाती हैं, गैलेक्सी ए और गैलेक्सी ई। ओके, सो लाइट ईयर आपको पता है कि टाइम का मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीजल्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ और यूएस सीडीसी के द्वारा पता लगा है कि 11 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया उन्होंने अपनी फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन 2022 में मिस कर दी है, ठीक है। मीजल्स एक हाईली कंटेजियस और सीरियस एयरबॉर्न डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है बेसिकली। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है ये, और हाई फीवर होता है शुरू में 10 से 14 दिन के अंदर जब वायरस को एक्सपोज होते हैं, और लगभग 4 से 7 दिन तक ये फीवर रहता है। फिर धीरे धीरे रैश इरप्ट होने लगते हैं,
और ये बॉडी के बाकी पार्ट्स पर, फेस और अपर नेक से फैलते हुए बाकी पार्ट्स पर भी फैल जाते हैं। कोई भी नॉन इम्यून पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है, और अनवैक्सीनेटेड यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वेमेन जो है वो हाईएस्ट रिस्क पर रहते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए वैक्सीनेट कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एपिलेप्सी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल एपिलेप्सी डे जो है वो नवंबर 17 को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि अवेयरनेस जनरेट की जा सके एपिलेप्सी के बारे में, जो कि एक ब्रेन डिसीज़ है जिसमें नर्व सेल्स जो है वो ठीक से सिग्नल नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से सीजर्स होते हैं। तो ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल रिदम होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से रिकरेंट सीजर्स होते हैं। क्रॉनिक इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ये एपिलेप्सी, जो कि अक्रॉस ऑल एजेस जो है लोगों को अफेक्ट कर सकती है। कुछ लोगों को कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं और वो अपनी कॉन्शियसनेस भी जो है वो खो सकते हैं। और कई तरह के कई वजहों से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, हेड ट्रॉमा हो, अल्कोहलिज्म हो, अल्जाइमर, स्ट्रोक, एबनॉर्मल ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, किसी भी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड उनको भी जो है कहा जा रहा है कि एपिलेप्सी है करंटली। और इससे जो है रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट एरिस। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो है वो फुलर अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं एरिस की, जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, और ये इसको कंपेयर किया जा रहा है प्लूटो के साथ। तो ड्वार्फ प्लैनेट एरीज 2005 में डिस्कवर किया गया था। ये मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून के बियॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है कुइपर बेल्ट में, और इसका मास जो है वो 25% मोर है एज़ कम्पेयर टू प्लूटो। 68 टाइम्स फार्दर है ये सन से, जितना अर्थ और सन का डिफरेंस है उससे 68 टाइम्स ज़्यादा सन और एरिस का डिफरेंस है, और इसीलिए लगभग 557 ईयर्स लगते हैं इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में अराउंड द सन। इसका एक बहुत ही छोटा सा मून भी है जिसको डिस्नोमिया कहते हैं। ओके, तो ड्वार्फ प्लैनेट बेसिकली वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि सन के आसपास ऑर्बिट कर रही है, बट उसका इतना मास नहीं है कि उसको प्लैनेट की तरह क्वालिफाई किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोरावर लाइट टैंक। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड लाइट टैंक जिसका नाम जोरावर है, वो अब ट्रायल्स होने वाले हैं उसके बस। ठीक है, तो डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर इसको बनाया है। कई तरह की टेरेन्स में ये वर्क कर सकता है, हाईली ट्रांसपोर्टेबल है, रैपिड डिप्लॉय किया जा सकता है इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन इंटीग्रेशन के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, और लगभग 25 टन से भी कम इसका वेट है। जोरावर क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि जोरावर एक मिलिट्री जनरल थे, और जिन्होंने जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अंडर 19th सेंचुरी में जो है वो काम किया था, और वो बहुत ही ऑनर्ड हैं उनके कॉन्क्वेस्ट के लिए, खासकर हिमालयाज़ में, जैसे लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान और स्कार्दू में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं C-130J सुपर हरक्यूलीज। ये टॉपिक अगेन सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स ने 2 ऑफ इट्स C-130J सुपर हरक्यूलीज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उत्तराखंड के एक अनफीजिबल एयर स्ट्रिप पर जो है वो लैंड करवाए हैं। तो 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। यूएस एयरफोर्स का प्रिंसिपल टैक्टिकल कार्गो और पर्सोनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, और इसकी पहली फ्लाइट 1996 में हुई थी। तो अपार्ट फ्रॉम यूएस एयरफोर्स, यूएस मरीन क्रॉप्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इटली और यूके भी जो है इसके लार्जेस्ट ऑपरेटर्स हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Second Voice of Global South Summit. This topic is important for your international relations. So Second Voice of Global South Summit has recently took place in virtual mode, and this is the second time that India has hosted this summit since January 2023. So what is Global South? Do not confuse it with a geographical term. It does not mean that those countries who are in the southern hemisphere are qualified as being members of Global South. Okay, for example, India and China both are in the northern hemisphere, still we are part of Global South, whereas Australia and New Zealand both are in the southern hemisphere, but they are not part of Global South. Okay, so generally, rudimentary for a rudimentary understanding, many people refer Brent line, which starts in the north of Mexico, as the
as the imaginary border of global south. But basically it's a north south divide. It shows the north south divide in Mexico based upon per capita GDP, and that's how global south has been represented. So global south is basically a geographical, geopolitical, historical and developmental concept. Okay, of course there are certain exceptions also. So India has emerged as the voice of global south, of course, after helping these countries, about 100 countries, with vaccines. India hosted the Voice of Global South summit virtually in January 2023 with representatives from 125 countries. And later on, under India's G20 presidency, African Union got full membership of G20. So at the 15th BRICS summit also, Indian Prime Minister Modi said that we do not see this global south as just a diplomatic term, but we have shared history of against colonialism and apartheid. Okay, India also hosted the India UN Capacity Building Initiative in September 2023, and the aim was to share our best practices with partner countries of the global south. So we have also inaugurated the Dakshin, which is a global center for excellence, and it is meant for global south countries. Okay, PM also coined the 5 C's, that is consultation, cooperation, communication, creativity, and capacity building for the partner countries. So the next topic is proposed India UK FTA. This topic is important for your international relations. So External Affairs Minister has recently met with UK's Prime Minister and Foreign Secretary to discuss about the India UK Free Trade Agreement, which is currently under discussion. So what can we expect from this FTA? So currently we from India, we have products like petroleum, medicines, diamond, machine parts, aeroplanes, wooden furniture, which are worth about $6 billion, and they face no tariffs in the UK. So even without an FTA, we will not be gaining much for these products. And for the services sector, India is convincing UK to issue private priority visas for Indian professionals who want to travel to UK to perform short-term assignments. But it will not be easy, okay, because there is an anti-immigration mood in the UK politics. We are also pushing UK for the rules of origin clause, so that no other third country takes the benefit of India UK FTA. Okay, so there is also an issue regarding government procurement, because we if it if the provisions of government procurement gets adopted, then we would have to allow UK producers to sell to our government, Indian government's procurement sector. On the other hand, Indian firms currently face competitive and restricted government procurement market in the UK with little business prospects. And apart from that, non-tariff barriers also matter, like labor standards, gender, environment, digital trade. So we do not need to, we must rather avoid taking any onerous obligations on these non-trade issues. So what is the significance of India UK FTA? So it will serve as a template for the future FTA that we ought to sign with the European Union, and government is counting on economic integration with Western countries and African nations to fuel our export growth. So, what has spurred this India UK FTA? So, of course, China is a common factor, and this is the reason that since the pandemic, the countries have realized that they cannot over rely on China. So they have to diversify their supply chains, and that's why this China plus one policy has been adopted by several countries, and that's why they are seeing merit in the option of New Delhi. Okay, so India has also exited from the regional comprehensive economic partnership. That's why India is also looking at forward to bilateral FTAs rather than entering into a multilateral one. Okay, so Brexit has also facilitated a certain kind of politics in US. I'm sorry, in UK, and the country would go into election mode in 2025. So before that, the conservatives want to showcase to their people that they are doing something for the economy. Okay, so how will India and UK gain from this FTA? So Indian textile exports currently face about 10% of tariffs in UK as compared to let's say country like Bangladesh. So if we go for FTA, then we would be able to compete with Bangladesh and in the textile industry, and through low or zero tariffs.
UK also get UK products in India also attract very high tariff rates, and if tariff reductions happen, then the UK will have deeper access to into Indian markets. But there are challenges in India UK FTA also. Okay, for example, many Indian exports to the UK already enjoy zero or low tariffs. That's why we do not gain much from this FTA. But there are also warnings from the British Parliament that if you go for zero duty access to Indian textiles, then least developed countries like Bangladesh would suffer, and the relationship between UK and Bangladesh would suffer in that matter. There are also talks about non-tariff barriers like regulations, standards, testing, certification, pre-shipment inspection, which all have to be discussed as part of the FTA. Okay, and there is also another issue called the carbon tax. Like the EU, even UK is pursuing or looking to impose a levy on metal imports uh, to offset the carbon emissions. So we have to accommodate those concerns into the FTA also. That would be a challenge for us. So the next topic is Global Talent Competitiveness Index 2023. This topic is important for your economy and your international relations topic. So global talent competitiveness index has seen India rank falling sharply from 83 10 years ago to 103 in the latest report. So this global talent competitiveness index measures how countries grow, attract and retain talent. So basically it's an annual benchmarking report which is published by the chain of business schools called the INSEAD. So it provides a unique resource for decision makers to understand how the global talent competitiveness picture works and how they can develop strategies to boost their economies. So if we look at this year's highlight of the 10th edition of GTCI, then it covers 134 countries. Singapore, Switzerland, US are the top 3 countries on the index, and India is ranked 103, which is the worst among that of BRICS countries. So the next topic is New Pamban Bridge. This topic is important for your economy section. So New Pamban Bridge is likely to be inaugurated by PM Modi in a few months. This will be India's first vertical lift railway sea bridge, and it will connect Rameshwaram on Pamban Island to Mandapam on the mainland in Tamil Nadu. Okay, so it will be replacing the iconic Pamban Bridge, which is India's first sea bridge. This will have a total length of about 0.78 kilometers. And what is the most striking feature of this bridge is that it will be a vertical lift. It will be having a vertical lift facility. So basically it will be meant for the boats to pass under the bridge smoothly. Whenever a boat would be coming, this bridge would lift vertically upwards in a parallel fashion to the deck, and then it will be done using sensors at each end. And this bridge has been designed by keeping in mind that it should have a double railway line, and future electrification work has already been done on it also. Okay. So the next topic is cosmic wine. This topic is important for your science and tech section. So a team of researchers have identified an extensive galaxy structure called cosmic wine. So they have used the data from James Webb Space Telescope, and this massive wine-like structure encompasses the 20 galaxies and which stretch over about 13 light years. These galaxies are very ancient. If we consider the age of the universe as about 13.4 billion years, then these galaxies are almost as old as 11 to 12 billion years. So they are very ancient. Okay, so it this cosmic wine harbors about two massive galaxies called Galaxy A and Galaxy E. So what is a light year? Light year is basically, we know that it is a measurement of distance and not time. So the next topic is measles. This topic is important for your social issues. So according to a report by World Health Organization and US Center for Disease Control and Prevention, an estimated 11 lakh children in India have missed their crucial first dose of the measles vaccine in 2022. So measles is a highly contagious and serious airborne disease, and it is caused by a virus from the paramyxovirus family, and it passes through direct contact and the air also. This infects the respiratory tract and spreads throughout the body. So after contacting the virus, at about 10 to 14 days later, high fever develops, which lasts for about 4 to 7 days. Then later on, a rash develops, which also stays
over the body for several days, and it starts usually from the face and upper neck. Any non-immune person can become infected. Unvaccinated young children and pregnant women are at the highest risk of these severe measles complications. So no specific antiviral treatment exists for measles, but vaccine can prevent it, of course. So the next topic is epilepsy. This topic is again important for your social issues. So National Epilepsy Day is celebrated each year on 17th of November to spread awareness about this brain disorder and to bust myths around this disease. So epilepsy is a brain disease where nerve cells do not signal properly and it causes seizures because of it. So brain's electrical rhythms have a tendency to become imbalanced and it causes recurrent seizures due to it. So it's a chronic non-communicable disease which affects people of all ages, and some people may have convulsions also, and they may lose consciousness because of it. So epilepsy develops as a result of many type of conditions like brain tumors, head trauma, alcoholism or withdrawal symptoms, Alzheimer's, strokes, heart attacks, abnormal blood vessel formation, brain inflammation, infections. So about 50 million people worldwide have this epilepsy, and the risk of premature death with epilepsy rises up to 3 times with epilepsy patients as compared to general population. So the next topic is dwarf planet Eris. This topic is important again for your science and tech section. So scientists have gained a fuller understanding of Eris and its differences with Pluto. So this Eris dwarf planet was discovered in 2005, and it is a member of group of objects which orbit in a disk-like zone beyond the orbit of Neptune planet, and it is called the Kuiper belt. So it has about 25% more mass than Pluto, and it has a distance which is 68 times more than the distance between Earth and Sun. Okay, so that's why it takes about 557 years to complete one orbit around the Sun. So it also has a very small moon called Dysnomia. So what is a dwarf planet? So it's a celestial body which orbits the sun. Remember that it orbits our own sun, but it is not as big enough as to be qualified to be called a normal planet. Okay, so that's why even Pluto is a dwarf planet. Okay, so the next topic is Zorawar light tank. This topic is again important for your security section. So India's indigenously designed and developed light tank Zorawar is likely to be ready for trials soon. So it has been developed by the Defense Research and Development Organization in collaboration with Larsen and Toubro. So it has been designed to operate in varying terrains. Will be highly transportable for rapid deployment, and it will have all the modern technologies like AI, drone integration, situational awareness, amphibious operation capability. It will weigh less than about 25 tons, and it will have a high power to weight ratio also. So who was Zorawar? So he was a military general and who served under the Jammu's Raja Gulab Singh in 19th century. He was very famous for his conquest of the Himalayas, including that of Ladakh, Tibet, Baltistan, and Skardu. So the next topic is C130J Super Hercules. This topic is important for your security section. So Indian Air Force has successfully landed two of its Super Hercules military transport aircraft at an unfeasible airstrip in Uttarakhand. So C130J Super Hercules is a four-engine turboprop military transport aircraft which made its first flight in 1996, and it is US Air Force principal tactical cargo and personal transport aircraft, and it has been developed by Lockheed Martin. So apart from India, the largest operators of Super Hercules are US Air Force, US Marine Corps, Australia, Canada, Italy, and the UK. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.